اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقولوا حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، ہمیں رزق حرام سے بچائے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر اللہ پاک کرے۔ دوستو، آج ہم پنجاب پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2012 کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ ہماری جو گفتگو ہوگی بیسیکلی اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جب پارٹیشن کے لیے درخواست دعویٰ دائر کرنا ہے کہ پارٹیشن کر دی جائے تو ہمیں کس طرح کے پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے یہ ہمارا ایک کمپریہنسو جو ہے وہ لیکچر ہے اور اس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو دوستو، یہ پنجاب پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2012 ہے۔ اس میں سول پروسیجر کوڈ جو ہے وہ بھی اپلائی ہوگا اس کے پروسیجر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، نوٹسز کے لیے، ایویڈنس کے حوالے سے۔ اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سی اموویبل پراپرٹی جو ہے اس کی پارٹیشن کے لیے، تقسیم کے لیے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس میں زرعی رقبہ شامل نہیں ہوگا۔ اموویبل پراپرٹی جو شامل ہوگی اس میں مینس این اموویبل پراپرٹی ادر دین ایگریکلچر لینڈ اور لینڈ سبسروینٹ ٹو ایگریکلچر جوائنٹلی اونڈ بائی 2 or more پرسن، لیکن زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی پراپرٹی جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کورٹ شیل ایشو، جب ہم نے دعویٰ دائر کرنا ہے کہ جناب یہ میری پراپرٹی ہے، اس میں ہم 4 حصے دار ہیں، 4 بہن بھائی ہیں، تو میرا حصہ جو ہے مجھے دے دیا جائے، تو اس کے لیے ہم ایک دعویٰ تیار کریں گے، دعویٰ لکھیں گے، دعویٰ ظاہرہ وکیل صاحب بھی لکھیں گے اور اس کو فائل کر دیں گے۔ جب ہم فائل کر دیں گے تو کورٹ شیل ایشو نوٹس ٹو دا ڈیفینڈنٹس، عدالت جو ہے وہ ڈیفینڈنٹس کو، جو دوسری پارٹیز جتنی بھی ہیں، جو آپ کے مثلا اگر آپ 4 بہن بھائی ہیں، اپنے گھر کا پارٹیشن کروانا چاہ رہے ہیں وراثتی گھر کی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ جناب باقی 3 کو ڈیفینڈنٹ بنا دیں گے اور اس میں پھر ان کو نوٹس کر دیے جائیں گے۔ نوٹس جو کیا جائے گا تمام ڈیفینڈنٹس کو، وہ 10 دن سے زیادہ کی ڈیٹ اس میں نہیں ڈالی جائے گی۔ اس میں الیکٹرانک کمیونیکیشن، ٹیلی کمیونیکیشن کے ذرائع کو، کوریئر کو اور رجسٹری کو بھی استعمال کیا جائے گا، رجسٹرڈ پوسٹ کو۔ دوستو، ڈیفینڈنٹس کو نوٹس ایشو کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ کلینٹ کی کاپی بھی، جو دعویٰ ہم نے کیا ہے عرضی دعویٰ، وہ بھی ساتھ لگائی جائے گی۔ اگر ڈیفینڈنٹ نہیں آتا نوٹسوں میں تو پھر جہاں وہ رہ رہا ہوگا اس کے گھر کے باہر چسپاندگی کر دی جائے گی، نوٹس لگا دیا جائے گا اور اخبار میں بھی اشتہار جو ہے وہ دے دیا جائے گا تاکہ وہ آئے، اور اگر وہ نہیں آتا بالکل تو پھر ایکس پارٹ جو ہے وہ پروسیڈنگ جو ہے وہ ہو جائے گی۔ If an ex parte order
is passed against a defendant, he may, within 15 days from the date of knowledge, apply to the court for setting aside the ex parte order, and shall submit along with the application the written statement and attach with such written statement copies of all the relevant documents in his reach or possession. अगर तो जब केस को एक्सपार्ट कर दिया गया, कोई डिफेंडेंट नहीं आ रहा, तो 15 दिन के उस ऑर्डर के 15 दिन के अंदर अंदर कोई आ जाता है तो क्या होगा, अदालत में वो फिर जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट जमा कराएगा विद इन 15 डेज आने के बाद, और उसके बाद साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी वो जमा कराएगा। अब दोस्तों, if the defendant submits the written statements and shows sufficient cause for his non-appearance, the court may set aside the ex parte order on such terms as it may deem fit. और अदालत अगर ये समझती है कि वाकई कोई सफिशिएंट वजह थी, उसको नोटिस नहीं मिला या क्या प्रॉब्लम है, उसको इजाज़त दे देगी कि ठीक है, तो प्रोसीडिंग में हिस्सा लॉ। रिटर्न स्टेटमेंट जो उसने जमा करानी है वो सेक्शन 5 के तहत होगी। डिफेंडेंट इन अ सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 30 डेज ऑफ हिज फर्स्ट अपीयरेंस इन द कोर्ट। एक्स पार्ट के 15 दिन के अंदर अंदर वो अदालत में आएगा और आकर शामिल हो जाएगा उसके अंदर प्रोसीडिंग के अंदर, और उसको 30 दिन दे दिए जाएंगे कि वो रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाए जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। If a defendant failed to file the written statement within the period mentioned in subsection, the court shall strike off his defense। अगर वो टाइम पे नहीं जमा कराता रिटर्न स्टेटमेंट तो उसका जो राइट है एविडेंस का जो वो स्ट्राइक ऑफ कर दिया। He shall not be entitled to lead any evidence, वो एविडेंस नहीं दे सकते। मीन्स प्रॉफिट की प्रोसीडिंग जो है वो क्या होगी। अब मीन प्रॉफिट ज़ाहिर है, अगर कोई बंदा एक प्रॉपर्टी में रह रहा है तो वो इस्तेमाल कर रहा है तो उसका किराया उसको देना चाहिए, वो भी जो है वो उससे जो है वो तलब किया जाएगा कि भाई तुम दो। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग or as soon as therefore the court may pending adjudication of the suit direct to the co-owner in possession of the movable property to deposit either on monthly or quarterly basis such interim means profit in the court as it may determine on account of share of co-owner not in possession of the property। देखिए 4 हिस्सेदार हैं, 3 उसमें रह रहे हैं, एक नहीं रह रहा, तो अगर उसका किराया जो है वो 50,000 रुपये बनता है तो गोया कि वो नहीं रह रहा, 12,500 रुपया उसको फिर वहाँ से किराया मिलना चाहिए। एक बंदा जिसने ये प्लेन दाखिल की है तो 12,500 रुपया वो तीनों डिफेंडेंट से उनके हिस्से के हिसाब से लेके वो जमा करवाएंगे। वो मंथली भी जमा करवा सकते हैं, क्वार्टरली भी जमा करवा सकते हैं। इफ़ एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 is passed, the co-owner in possession of the property shall deposit the amount on or before the date fixed by the court and in the absence of any such order or before 15 of the month। अदालत जो ऑर्डर करेगी उसके मुताबिक, या अगर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया तो 15 तारीख जो है वो हर महीने की उसमें ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर या फिर क्वार्टर का जो पहला महीना होगा उसमें पैसे जमा करवाएगा। If the co-owner failed to deposit the amount under this section within the time specified under subsection 2, the court shall, अगर वो मीन्स प्रॉफिट जमा नहीं करवाते जो डिफेंडेंट है तो फिर क्या होगा, अगर प्लेंटिफ वहाँ पर काबज है और वो मीन्स प्रॉफिट नहीं जमा करवाता डिफेंडेंट्स को देने के लिए तो क्या होगा। इन केस ही इज प्लेंटिफ डिसमिस हिज सूट, उसका सूट डिसमिस हो जाएगा। इन केस ही इज डिफेंडेंट स्ट्राइक ऑफ हिज डिफेंस and in that event he shall not be entitled to lead any evidence, उसका right of evidence खत्म हो जाएगा।
when there is a dispute as the title of the immovable property or share of immovable property, the court shall decide such question before proceeding further in the suit under this act. तो क्या होगा जनाब? The determination of question of title or share of the immovable property by the court under subsection 1 shall be deemed to be a decree in terms of the court. सिविल कोर्ट से हासिल करदा डिग्री से ये डिटरमिन किया जाएगा कि इस जायदाद का मालिक कौन है कौन नहीं है। गोया के पार्टीशन के लिए अगर तो ये प्रॉब्लम है कि जिन मिल्कियत का भी रोला है प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको उसके लिए डिक्लेरेटरी डिग्री लेनी पड़ेगी। आगे चलते हैं जनाब। इसका जो 9वां सेक्शन है वो अपॉइंटमेंट ऑफ रेफरी फॉर पार्टीशन। इफ all the co-owners agree in writing on partition of the immovable property through appointment of a referee, the court shall appoint a referee for partition of the property within such specified or extended time as the court deems appropriate। उसको तकसीम करने के लिए एक कमीशन मुकर्रर कर देंगे कि और उसकी जो फीस होगी वो सब के ऊपर उनके शेयर के हिसाब से उनको तकसीम कर दी जाएगी तमाम पार्टीज को। और द कोर्ट में फिक्स फी जो भी फी हो। 10वां सेक्शन है जी इंटरनल ऑक्शन। इफ ऑन द डेट फिक्स बाय द कोर्ट फॉर द पर्पस द को-ओनर फेल टू सबमिट रिटन एग्रीमेंट अबाउट द पार्टीशन of the immovable property through appointment of a referee or referees of opinion that the property is not portable or the court find that the proposal of the referee is in contravention of any law। जब ये देखा जाएगा रेफरी ये रिपोर्ट देगा कमीशन ये रिपोर्ट दे देगा कि इस प्रॉपर्टी की पार्टीशन जो है वो नहीं हो पा रही। कोई कह रहा है मुझे अगला हिस्सा दो, कोई कह रहा है मुझे पिछला हिस्सा दो, कोई कहता है मुझे ज़्यादा दो, कोई कहता है मुझे कम मिल रहा है। उसके लिए फिर नीलामी के ऑर्डर कोर्ट का नीलामी में जो है वो खुद भी हिस्सा ले सकते हैं और खुलेआम भी की जा सकती है। जो खुद हिस्सेदार जो है मालिक एनी टू आर मोर co-owners of the immovable property may submit their written offer or counter written offer until one of them makes the highest written offer। ये खुद भी खरीद सकते हैं। अगर ये खुद ना खरीद सके तो फिर ये ओपन ऑक्शन में चला जाएगा। ओपन ऑक्शन में एक रिजर्व प्राइस मुकर्रर की जाएगी। यहाँ भी रेफरी होगा, कमीशन होगा, उसे कमीशन कहेंगे। वो उसकी निगरानी में रिजर्व रख कर और कीमत रख कर इससे कम पे नहीं बेचना। फिर ओपन ऑक्शन जो होगी उसमें लोग हिस्सा लेके इसको खरीद सकते हैं। All the owners of immovable property may at any stage of the proceeding before the date of open auction of the property submit a private settlement in the। जब ओपन ऑक्शन भी होने वाली हो तब भी कानून में ये है कि अगर आपस में उनकी प्राइवेट सेटलमेंट हो रही है तो वो उसको कर सकते हैं तमाम हिस्से। मीन्स प्रॉफिट के हवाले से ये है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 10 the court may at the time of final settlement award means profit to a co-owner not in possession of the joint immovable property by deducting the same from the share of the co-owner in possession of the property or by directing the co-owner in possession of the property to pay the same to the co-owner not in possession of the property। जब फाइनल हो जाएगा सारा मामला अदालत ये कहेगी कि जनाब जो बंदा इसमें नहीं रह रहा उसने जो मीन्स प्रॉफिट मांगा है उसको हिस्सा उसको दें। टाइम लिमिट है जी इसकी 6 माह तक रखी है अदालत ने और इसके हवाले से नेसेसिटी रूल्स भी बन सकते हैं। ये था दोस्तों पार्टीशन एक्ट। अल्लाह पाक हम सब का हमें नासर हो।